Morning students. This video for class 10 students. Students, from many days I was not able to upload videos because of my evaluation work. Now I'm free. Now I'm ready to start your course again. Okay, so chapter number 8 we are going to start. In chapter number 8, that is the chapter of matrix. Name of the chapter is matrix. Okay, so in this chapter what we did, we have learned that what is matrix, the rectangular arrangement of elements is called matrix. Matrix is always denoted by the capital letters and the elements are always written with the small letters. If you want to write the cell address of this element 4, then you should write A and the address. What is the address? Address is second row, first column. So this is second row, first column. You have element number 4. So this is the cell address of 4. Okay. So capital letter we are using for complete matrix. This is the matrix of order 2 by 2. And what is order? Order means number of rows into number of columns. Number of rows are 2 and number of columns equal to 2. So the order is 2 by 2. That we have learned in exercise number 8.1. In that exercise we have learned how to compare two matrices. For example, suppose we have a matrix 2 3 4 5 and another matrix we have over here. It is x, y, z and p, and both the matrices are equal to each other. So what you should do, you should compare the corresponding elements. The first element is 2. Here first element is x, so therefore you can say x is equal to 2. Similarly, y is equal to 3, and similarly z is equal to 4 and p is equal to 5. Okay, so these are the things which we have learned in exercise number 8.1. Now today we are going to proceed for the next topic, that is called matrices, the multiplication of matrices. So in this exercise we will learn how to multiply the matrices. Okay, but before this I want to clarify one more thing to you, that how to multiply a scalar with the matrix. So these two topics we are going to cover up today under this 8.2. Okay, so let's start 8.2. Now see student, our next topic is multiplication of matrix with a scalar. So what does it mean? It means suppose you have a matrix 3 2 5 1. Okay, and you are interested to calculate 5a, means you are going to multiply the matrix with 5. So what you have to do, in right side you should write 5 outside and then multiply this number to each and every member. So your result will be 15, 5 2s are 10, 5 5 is 25, 5 1 is 5. So this is the right way to get the product with scalar. Means if you are taking one matrix and one scalar number, the way is like this. Here one matrix, one scalar. 5 is a scalar number, a is a matrix. So we are getting the product. Now let's see if both are matrix. This is also matrix, this is also matrix, how to multiply. So student, our next topic is multiplication of a matrix with a matrix. So here we have a condition that if number of column of first matrix is equal to the number of rows of the second matrix, if this condition will not be satisfied, then multiplication is not possible at all. You see here we have a matrix 2 3 1 5, 4 elements are here, so order is 2 by 2. Okay, here we have 2 elements only, 2 and 3. The order is how many rows? 1 2. So 2 rows and then column. So here you check whether number of columns of the number, this number stands for number of column, this number stands for number of rows, number of rows, number of column. So फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो होने चाहिए वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल अगर हो रहे हैं, means both are same, means multiplication is possible. So this is first matrix, this is second matrix. So number of columns of the first matrix must be is equal to number of rows of the second matrix.
इसके रोज होनी चाहिए, इसके रोज देखो 2 हैं, इसके कॉलम्स 2 हैं, तो आपस में इक्वल है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रूल है हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. So that rule has to be followed for multiplication. So let's start the multiplication. So student, for multiplication what you have to do, you should take a rows from here and columns from here. So we have two rows, so first row is 2 3. From here we have only one column, so 2 3 is the first column. So when you are going to multiply, the first element is multiplied with the first element of the second, then plus sign will be in between, then second element is multiplied with the second element. So look at here what I am doing here. So this 2 into 2, so I will write here 2 into 2, then plus, then 3 into 3, 3 into 3. So I have completed first row, first column I have completed. Now I don't have another column, so first row, first column finished. Now it is a turn of second row. So second row, this first column. So where is the position of second row, first column? I think this is the position where we should write it. So 1 into 2, because 1 into 2 plus 5 into 3. So finally you are going to get 2 2 is 4, 3 3 is 9, 4 plus 9, 2 1 is 2 plus 15. So your result is 13 and 17. Okay, so this is the answer. So look at here, if you are going to multiply two matrices, the round one must be equal. जो अनराउंड होगा वो प्रोडक्ट का ऑर्डर बन जाएगा, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट आएगा इसका, उसका ऑर्डर होगा 2 रोज एंड 1 कॉलम. सो लेट्स चेक. इसमें देखिए अब 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना है 2 into 1. सो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का तरीका रहेगा. Okay, so you should apply this concept and then we have to start the exercise. Now let's take the first question over here. We have a matrix M is equal to 2 0 1 2 and the another matrix is 2 0 minus 1 2, and we have to find the value of M plus 2n. So first of all we have to calculate 2n. So 2n, how can we calculate? Means 2 is multiplied with this matrix. So 2n, first we will calculate. So 2n means 2 2 is 4, means first we will write like this, 2 into 2 0 minus 1 2, then you multiply it, you will get 4 into 4 0 minus 2, then 4. This is the value of 2n. Now you have to add this with m plus 2n we have to find. तो पहले m को लिखेंगे आप 2 0 1 2, देन 2n की वैल्यू है 4 0 माइनस 2 4. अभी आपको प्लस करना है, तो प्लस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना होता है. इसका पहले से प्लस कर दो, 2 + 4 6 हो गया. इसका सेकंड, इसके सेकंड से ये वाला 1 -2 से प्लस होगा तो -1 आ जाएगा, 2 + 4 6 हो गया. तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया. सो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. Now student, look at the next question. This is A, the value of A is 2 0 1 2 and the value of B is 0 1 -2 3, and we have to find the value of 2A minus 3B. तो 2A minus 3B हम डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं. 2A minus 3B is equal to, तो 2A का मतलब हो गया इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो डायरेक्टली आप यहाँ लिख दो, ऐसे करके लिख दो 2, और A की वैल्यू होगी 2 0 1 2, और फिर हमें चाहिए 3B, 3, और B यहाँ लिख दो 0 1 -2 3. So this number has to be multiplied 4 0 2 4. Here you should multiply by only 3, not minus. Okay, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो 3 0 is 0, 3 1 is 3, 3 2 is -6 और 3 3 is 9. अब आपको क्या करना है, इनको सेपरेट करना है, एलिमेंट्स को सेपरेट करना है. जैसे प्लस किया था इसमें सेपरेट करना है. तो 4 - 0 4, then 2 - 3 2, sorry 0 - 3 -3, 2 minus of -6, क्योंकि ये माइनस ऑफ -6 है तो ये तो हो गया +6, तो 2 + 6 8 बन जाएगा यहाँ पर. 4 - 6
4 माइनस 9, सॉरी 4 माइनस 9 ये हो गया -5। सो ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। ओके, क्या किया आपने, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस किया हुआ है। जैसे 4 को 0 से माइनस किया, 4 में से 0 माइनस किया, फिर 0 में से आपने 3 माइनस किया, फिर 2 में से आपने माइनस किया -6 को, क्योंकि ये माइनस तो पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 6 हो जाएगा 8, तो 4 माइनस 9 दैट इज -5। तो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट। हमें सॉल्व करना है x के लिए, यानी मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x इज़ व्हाट, x इज़ नॉट अ नंबर, x इज़ अ मैट्रिक्स। तो इस x को मुझे लेफ्ट में रखना पड़ेगा पॉजिटिव बना के, लेकिन और बाकी को फिर हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो x तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो उसको शिफ्टिंग इसी x को ही शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि प्लस का बन जाएगा। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन हो जाएगा 2 1 5 0, इसको हम ऐसे रख देते हैं, और राइट साइड से जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा -7 4 2 6, और ये जो 3x है हमने शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, क्योंकि इसे प्लस बनाना था, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। तो यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो 2 माइनस -7, तो ये हो गया 9, और फिर हो जाएगा 1 - 4 -3, फिर 5 - 2 इट इज़ 3, 0 - 6 इट इज़ -6। ओके, एंड इट इज़ इक्वल टू 3x। तो आपको तो लेकिन x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x से आपने इसको हर एक को डिवाइड देना है। तो 9 को अगर आप 3 से डिवाइड दोगे तो 3, फिर 3 -3 को डिवाइड दोगे तो -1 आ जाएगा, 3 से 3 को डिवाइड देंगे तो 1, और इस 3 से 6 को डिवाइड देंगे तो -2। सो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, सो स्टूडेंट take the help from these questions, and today you are going to start exercise number 8.2, and in the afternoon time you are going to show me these questions to me. Okay, thank you.